Assalamu alaikum and very good morning to all of you, dear viewers. You're welcome to my mentor YouTube channel. I hope you are all fine. Yesterday we saw an incident that happened at SMHS hospital where a doctor was slapped by the attendant of a patient. We must condemn that. That's not good. We need to understand the services of our doctor community towards the society, especially in our government hospitals, because the ideal ratio that has to be is 1 is to 28. One doctor has to see around 28 patients in a day. But in case of our country and especially in our state, doctors have to see more than 200-300 patients in a day. So they are too much overburdened. So that's a systematic failure. डॉक्टर्स कांट डू एनीथिंग फॉर दैट. बहुत लोड है हमारे डॉक्टर्स पे, बहुत सारे पेशेंट्स को देखना होता है. तो हर एक पेशेंट जो आता है टाइम कम होता है इनके पास, क्योंकि सब पेशेंट्स की नीड्स को केटर करना होता है. तो अगर सिस्टम सही होता, बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमारे पास होते हैं, तो डॉक्टर इतने ओवरबर्डन नहीं हो जाते, पेशेंट्स इतने सफ़र नहीं हो जाते. सो ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है जिसकी वजह से पेशेंट्स भी पिस रहे हैं और डॉक्टर कम्युनिटी आफ्टर स्टडिंग टू मच, आफ्टर गिविंग देयर ब्लड फॉर देयर स्टडीज, वो बेचारे भी सफ़र हो रहे हैं. And then there was protest from doctors as well. They striked. They showed their resent against the action taken by that attendant. So वो तो रहता ही है क्योंकि their emotions too were high. Someone from their community got slapped, so it was not acceptable to them. So उससे फिर और patients बेचारे सफ़र हुए. And one journalist as well, he too was not given the respect that he deserved from the doctor community. So overall अगर हम इसका रूट देखेंगे ना, रूट काज, अब आधे डॉक्टर्स के खिलाफ बोल रहे हैं, डॉक्टर्स पेशेंट्स के खिलाफ बोल रहे हैं. प्रॉब्लम यह है कि our doctors are overburdened. We must understand that. We need to have a good civilized society. The more education we will give to our wards, more we will understand each other's feelings. अब पेशेंट बेचारा आ रहा है, हार्ट पेशेंट है, टाइम बहुत लेस है डॉक्टर के पास, एंड एट टाइम्स हम यहीं से बोल रहे हैं डॉक्टर को कि आपको ये करना है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ऑक्सीजन लगाओ. वी डोंट हैव द नॉलेज, वी डोंट हैव एनी राइट टू से दैट. डॉक्टर हैज द नॉलेज, ही इज अ स्पेशलिस्ट इन दैट फील्ड, ही नोज व्हाट टू डू. तो कभी कभार हम बोलते मैंने ऐसे ही बोला, इसको इसने वो नहीं किया, तब तक इसकी डेथ हुई. दैट्स रिटन. समवन हैज टू डाई, ही और शी विल डाई. अब अगर डॉक्टर अपने प्रोसीजर से जा रहा है, he has the knowledge of that, and at times the things which are to be done by the other paramedical staff, doctors don't do that on their own. तो हम बोलते डॉक्टर ने खुद क्यों नहीं किया, तो बाकियों का काम होता है वो. अगर वो करने बैठेगा तो और बाकी पेशेंट सफ़र हो जाएंगे. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सिस्टम. तो हमें नॉलेज होना चाहिए. We need to bring that maturity as a society in ourselves. That maturity will only come once we will be educated. तो जितना ज़्यादा हम एजुकेशन से दूर रहेंगे, उतना कम हम समझ पाएंगे सिस्टमेटिक फेलियर्स को. जितना ज़्यादा एक सोसाइटी इवॉल्व हो जाती है थ्रू एजुकेशन, उतना हम समझ पाते हैं अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल. एंड डॉक्टर कम्युनिटी और अदर कम्युनिटीज हु आर सर्विंग द पेशेंट्स, they too must understand the feelings of the patients, feelings of the people too are suffering. वो भी बड़ी गिव्स में होते हैं, तो दोनों तरफ से फिर गलतियां हो जाती है. बट द प्रॉब्लम इज, बेसिक प्रॉब्लम इज दैट बहुत ओवरबर्डनड है हमारे हॉस्पिटल्स, बहुत लोड है हमारे डॉक्टर्स पे. इसीलिए वो ट्रीटमेंट, वो एफेक्शनेट एमिकेबल बातचीत नहीं हो पाती है डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान जो होनी चाहिए. दैट हैपन्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Their main priority is education, their main priority is health of their people. That's what a happy country needs. And in our country, unfortunately, in our part of the world, we have priority on defense, we have priority on wartime goods. वो हमारा priority रहता है, बस जंग करना है, चाइना के साथ लड़ना है, पाकिस्तान के साथ लड़ना है, ऐसा करना है. अगर हमारा प्रायोरिटी हेल्थ रहता, हमारा प्रायोरिटी एजुकेशन रहता, आई डोंट से कि देयर इज इट्स नॉट गुड टू गो फॉर डिफेंस. दैट टू इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन पीस इन द कंट्री, बट as per the economic surveys, we need to spend around more than 3% of our GDP on health sector.
more than 6% of our GDP on education sector, but that really happens we spend less than 1%. It's not our priority. अगर ये चीज़ें priority हो जाते तो फिर system change हो जाता within 20-30 years. हमें लगता कि now we are getting the treatment that our patients need from our doctors. So both sides से गलतियां होती है, लेकिन असल में है एक सिस्टमेटिक फेलियर. वी नीड टू चेंज द सिस्टम. We need to keep on priority. The more hospitals we will have, more doctors we will have, more paramedical staff we will have in our hospitals, more needs of the patients can be taken care of in short span of time. So the message from this video to all the viewers would be always have patience, always try to understand others' perspective as well, because the way we say only the wearer knows where the shoe pinches. We must understand both perspectives. Attendant bichara be out of control raha, his emotions were very high because someone very close to his heart has lost his life, so he could not control his emotions. But we must control at such occasions ourselves, because this is not good sign of a good society. And we need to have security arrangements as well in our hospitals, because it's not always easy to control the patient, to control the attendants when they lose someone very close to their life, somebody's son, somebody's daughter, someone's mother. So at that time patients go out of control. There should be security arrangements always in our hospitals, especially in the hospitals where the patient load is very high, where the doctors are already overburdened. Our system, our government must take care of that. I hope this message will be quite helpful to all those who listen this. See you in my next video. Till then, take care. Bye. May Allah bless you all. Allah Hafiz.